Okay, Assalamu alaikum. So today we are gonna start a new writer, Earnest Hemingway. अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नावलिस्ट हैं, अमेरिकन नावलिस्ट रह चुके हैं ये। इनके काफ़ी मज़े मज़े के नावल हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि फेयरवेल टू आर्म्स है और फ्राम होम द बेल्स टोल्स, इस तरह के द ओल्ड मैन एंड द सी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके नावल हैं जो काफ़ी दफ़ा इम्पोर्टेंट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो पहले इनकी बायोग्राफ़ी देखेंगे, फिर इनके जितने भी इम्पोर्टेंट नावल्स हैं उन सबको स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ही वॉज बॉर्न इन 1899 इन ओक पार्क। 1899 में ये पैदा हुए थे। ही कमिटेड सुसाइड इन 1961। 1961 में इन्होंने सुसाइड कर ली थी। ही वॉज ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द नेम ऑफ हिज फादर वॉज क्लैरेंस हेमिंगवे। His father was a doctor and a music teacher. The name of his mother was Grace. In 1913, he entered Oak Park and River Forest High School. At school, he was an excellent student, boxer, footballer, and writer. He graduated from Oak Park and River Forest High School in 1917. He joined as a reporter for the Cannon City Star newspaper. In 1918, he tried to join the U.S. Army so that he can fight in World War I. He was unsuccessful because of poor eyesight. He volunteered himself as a driver with the Red Cross Ambulance Corps. In 1918, he was seriously injured by the trench mortar of machine gun. He was admitted in a Milan hospital where he fell in love with American nurse Agnes von Kurowski. In 1920, he moved to Toronto and joined the Toronto Star newspaper as a reporter. In 1921, he married Elizabeth Hadley Richardson. She turns out to be the first of 4 wives. The same year, he visited France. In 1927, he divorced Elizabeth Handley and married Pauline Pfeiffer, a fashion writer. In 1928, his father Clarence committed suicide. In 1933, he, with his wife Pauline, went Kenya for a 10-week safari. In 1937, he went to Spain to report on Spanish Civil War for the North American newspaper Alliance. In 1940, he divorced Pauline and married Martha Gellhorn, a novelist. In 1945, he divorced Martha Gellhorn. He married Wells, also a journalist. His mother died in 1951. In 1953, he was awarded with Pulitzer Prize for his novel Old Man and the Sea. In 1954, he was awarded with Nobel Prize in Literature. He left Cuba in 1961. नोबल प्राइज़ विनर हैं ये। 1954 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब इनके वर्क्स देख लेते हैं। द टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग 1925, द सन आल्सो राइजेस 1926, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, टू हैव एंड हैव नॉट 1937, फ्रॉम whom the bell tolls 1940, across the river and into the tree 1950, the old man and the sea 1952, adventures of young man 1962, Island in the stream 1970, the garden of Eden 1986. नॉन फिक्शनल इनके वर्क हैं। डेथ इन द आफ्टरनून 1932, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935, द डेंजरस समर 1960, रिटन इन 1960 और पब्लिश्ड हुआ था 1985 में।
अ मूवेबल फीस्ट 1964। नेक्स्ट हैं शॉर्ट स्टोरीज, 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स 1923। इन आवर टाइम 1924, मैन विदाउट वुमेन 1927, द स्नोज ऑफ किलिमंजारो 1936, विनर टेक्स नथिंग 1933, द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938, द एसेंशियल हेमिंगवे 1947, द हेमिंगवे रीडर 1953, द निक एडम्स स्टोरीज 1972। ओके, हेमिंगवे की बायोग्राफी जो है वो हो गई। इसको मैं नोट डाउन नहीं कर सकी, इसके लिए ये मेरे पास बुक थी जिसमें ये बायोग्राफी इनकी काफ़ी अच्छी लिखी हुई थी और इनके नोटेबल जितने भी वर्क्स हैं उन सब के बारे में डिटेल थी। सो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।